Okay, so let me continue with the lecture. Now, just to conclude this topic of skin effect. So for good conductor, what we have so far observed is for a good conductor, propagation constant was calculated to be equal to 1 plus j omega mu sigma divided by 200. And from which we concluded that for good conductor, attenuation constant is equal to phase constant, and it is equal to omega mu sigma divided by 200. And other thing that we observed was that for good conductor, skin depth is equal to 2 times omega mu sigma under the root. So propagation constant, skin depth. Also, if we want to find out the intrinsic impedance, so the expression for intrinsic impedance of any medium is equal to j omega mu divided by gamma. Now, before I put this, if you remember, this expression is actually इसको हमने किसके इक्वल लिया था कि ये आपके पास था j under root omega mu sigma. The original expression was this one. इसमें फिर हमने ये किया था कि j under root को फिर हमने किससे रिप्लेस कर दिया था 1 plus j divided by 200. So if you use this one कि propagation constant इसके बराबर है, so you can say j omega mu divided by j under the root omega mu sigma under the root. So this will become j under the root omega mu divided by sigma under the root. And then again, in place of j under root, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 plus j divided by 2 under root. So 2 under root को मैं इसके साथ लिख लेता हूँ. So we end up with omega mu divided by 2 sigma under the root. So this is the expression of intrinsic impedance for a good conductor. Now you can see कि यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, उसको आपको ट्राई कर लेंगे कि जो स्किन डेप्थ है, स्किन डेप्थ इसकी एक्सप्रेशन को अगर आप देखें 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा, यहाँ को आप यहाँ पे भी आपको इस तरह की एक्सप्रेशन नजर आ रही है ओमेगा म्यू. इसको आप अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे सो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि ईटा को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 प्लस जे, और इन टर्म्स ऑफ स्किन डेप्थ आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय स्किन डेप्थ multiplied with attenuation cost. So these are some of the relationships that you will require to solve some of the problems.
बट नाउ यू नो कि ये कहाँ से हमने डिराइव की। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू जनरल wave equation solution. नाउ प्रीवियसली जब हम वेव इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने कुछ एग्जम्पशन की थी। ठीक है, और एग्जम्पशन हमने क्या की थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इक्वेशन थी उसमें हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ई, सो मैं इसको यह लिख लेता हूँ कि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा ई, it will be function of x, it will be function of y, it will be function of z। फेजर में बात कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेरिएशन का हमें पता है कि साइनोसाइडल है, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। So generally electric field vector is a function of x, y, z, and generally electric field vector will have all of the components। So मैं कहूँगा कि इसका x component भी होगा, and this x component will depend on x, y, and z। This vector will also have y component as well as, so it means कि this vector will have all of the three components। But हमने जो previously हमने assumption किया की थी we assume in our previous solution of wave equation that so last time हमने क्या किया था, we assume this thing, लेकिन जनरली हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, वो ये होगी। So now we need to go through the wave equation solution by assuming कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों और हर कंपोनेंट x पे भी डिपेंड करे, y पे भी डिपेंड करे, z पे डिपेंड करेगी, तो फिर हमारे पास सोल्यूशन की क्या फॉर्म होगी। ठीक हो गया, इसको मैं समराइज कर लेता हूँ। ये जब हमने ये अजम्पशन की थी हमने क्या फाइंड किया, हमने ये फाइंड किया कि इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आया वो भी सिर्फ z पे डिपेंड कर रहा था और उसका सिर्फ y कंपोनेंट था, और एज वेल एज वो सिर्फ और सिर्फ z पे डिपेंड कर रहा था। ठीक, ये हमारे पास प्रीवियस केस की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, तो जनरलाइज हमारे पास जो वेव इक्वेशन है मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये है डेल स्क्वायर ई है। नाउ एक और इम्पोर्टेंट जो हमने डिस्टिंक्शन की थी वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि हमने एक कंसिडरेशन की थी कि अगर लॉसलेस केस था, लॉसलेस केस में ये इक्वेशन थी हमारे पास, और दूसरा केस हमने लिया था लॉसी केस, और लॉसी केस में इक्वेशन ये थी।
So you can see the structure of the equation is almost same. सिर्फ difference हमारे पास कहाँ पे आ रहा है कि अगर lossless case है तो ये factor है और अगर lossy है तो. So now just to make things simple, मैं general wave equation solution में फोकस करूंगा lossless case के ऊपर. ठीक हो गया. तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा. But our method or our solution will be equally valid to lossy case as well. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ आपको ये losses factor include करने पड़ेंगे. No difference whatsoever. Okay. इस वक्त हमारे पास अब सिचुएशन ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसको हम इस तरह इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है इन दिस फॉर्म. So this is our second order partial differential equation. We need to find out what is going to be the solution for electric field vector. तो अब हमारे पास ये जो वेक्टर है ये इसकी तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस फॉर्म. ठीक है. यहाँ पे now what we can do is maybe you have already gone through such methods in your mathematics courses. Partial differential equation को solve करने के different methods हैं. उनमें से हम एक मेथड यूज करेंगे जिसको आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है ना. which method I'm going to use? Method of separation of variables. This is one of the methods that is used to solve partial differential equations. So we will also be using that method. But what we can do is कि ये जो equation है ये जो वेक्टर है E है इसके तीनों कंपोनेंट्स हैं X भी है Y है Z है. What we will do is कि हम पहले इसको एक कंपोनेंट के लिए सॉल्व करेंगे और फिर इसको जनरलाइज कर देंगे कि अगर एक कंपोनेंट के लिए ये इक्वेशन का सलूशन ये है तो दूसरे के लिए क्या होगा. ठीक हो गया. सो व्हाट वी विल डू इज we will first solve this partial differential equation for x component of electric field. So पहले हम x component के लिए सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि सोल्यूशन किस किस्म का है और फिर हम कहेंगे कि x कंपोनेंट का ये सोल्यूशन है तो y कंपोनेंट का ये सोल्यूशन होगा, z का ये होगा और फिर हम टोटल वेक्टर का सोल्यूशन निकालेंगे. ठीक है. सो हमारी जो इक्वेशन है इसमें वेक्टर e की जगह हम अज्यूम करेंगे कि अगर इसका x कंपोनेंट अगर कंसीडर हम करें तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी. तो दिस इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन. सो जो मैंने मेथड की बात की यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वी विल अज्यूम कि ये इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है जिसको मैं ex कह रहा हूँ एंड यू शुड रिमेंबर कि ex जो है फंक्शन ऑफ x भी है, फंक्शन ऑफ y भी है, फंक्शन ऑफ z भी है. यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है. गो बैक. x कंपोनेंट जो है
एक्स वाई जी पे डिपेंड करता है, ये वाई कंपोनेंट है ये भी इन तीनों पे डिपेंड करता है, जेड जो है वो तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने इस इक्वेशन में तो यहाँ पे सिंपली ई एक्स लिखा हुआ है, बट वी नो कि इसका हम फर्स्ट टर्म में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले रहे हैं, तो अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि ये एक्स एक्स पे भी डिपेंड करेगा, वाई पे भी डिपेंड करेगा, जेड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो वी विल अज्यूम कि इसका जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, इसको आप इक्वेशन ए कह दें। इसका सोल्यूशन जो होगा इस तरह का होगा कि देयर विल बी सम फंक्शन जिसको मैं एफ कह रहा हूँ और वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक और फंक्शन होगा जिसको मैं जी कह देता हूँ सच दैट दिस जी विल डिपेंड ऑन वाई ओनली, और एक और फंक्शन होगा जिसको आप एच कह दें और वो सिर्फ जेड पे डिपेंड करे। तो यहाँ पे अगर आप देखें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने क्या किया है कि इस इक्वेशन के सोल्यूशन को, इसका सोल्यूशन ऑफ कोर्स ई एक्स है, आई हैव represented ex as a function of as a product of three functions, this function, this function, and this function, but in such a manner that this f is dependent only on x, this g is dependent only on y, and this h is dependent only on z. So basically this is what method of separation of variable is. So मैं क्या कहूँगा कि let ex which is equal to this thing is the solution of equation A. So इस वक्त हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन इस तरह का होगा, and now we can verify whether this solution is correct or not by substituting this solution in equation number A. और फिर हम देखेंगे कि अगर ये सोल्यूशन इस तरह का है तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को हम इसमें पुट कर लेते हैं। सो वी विल से substitute this assumed solution in equation A. So in the first term, we are going to take the derivative of ex with respect to x, and we are going to take derivative two times. But in ex there is only one function that depends on x, and that is f. So we only need to take the two times derivative of this function. These two terms will be considered as constant in the first term. Plus, in the second part, we are going to take the derivative of ex with respect to y. So now we are only going to focus on g. F and h will be considered as constant. And in the third part, we are going to take the derivative of only h, because h is dependent on z, and these two will be constant. And in the final part, we are going to just substitute this whole term. So मैं इसको consider कर रहा हूँ. So what we will get? We will get f double dash x. So this double dash means I'm taking the second derivative of fx, g of y h of z, plus now we are going to take the derivative of term with respect to y, so g double dash y, and in the third part we are going to take the derivative of function, इसको मैंने h से represent किया है, so h double dash z, plus k square f of x g of y h of z equal to 0. This is something which you will get from equation A. Okay. Now, in the second step, divide this equation by f of x, g of y, h of z. So you will get f double dash x by f of x plus g double dash y
divided by g of y plus h double dash z h of z plus k square equal to 0. So let me continue with this discussion in the next last session. Okay. So this is the equation that we will talk about in the next session.